Hello, good evening. Welcome to all our audience and very good evening. Namaste, pranam, whatever is your choice. We have today with us Major General Rajiv Narayanan. He is a well known expert on strategic matters, geopolitics, what have you. I don't have to introduce him. Welcome to the show, sir. Thank you, sir. Thank you, Dushan. Thank you for having me on your platform. It's a pleasure and an honor to be on Stripe. यस सर, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी यंग प्लेटफॉर्म विच वी हैव जस्ट स्टार्टेड। ऑल्दो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है 3 साल पुरानी है और हमने इसके बीच में काफ़ी माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। एक ईयर बुक भी पब्लिश की है और वी जस्ट रिसेंटली कंडक्टेड अ सेमिनार जिसमें राजनाथ सिंह वाज द चीफ गेस्ट, गिव द इनॉग्रेल एड्रेस एंड वी हैड सर्विंग फ्रेटर्निटी कमिंग इन, chipping in. It was on Atmanirbhar Bharat, very well received, co-presented with Economic Times. So the entire Times of India group was there, and it was, you can say, Lucknow का सबसे बड़ा शो था ये. So that gave me the idea that I know we should also start reaching out to the public through the YouTube channel. Although you know that I have been on the circuit quite often, but we thought let us have our own प्लेटफॉर्म कमिंग इनटू द एनवायरनमेंट। सो ये हमारा 18वां एपिसोड है आपके साथ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चाइना। क्या चाइना अमेरिका के खिलाफ पूरी टोटल लड़ाई करने जा रहा है? और अगर अमेरिका के अगेंस्ट करेगा तो इसका मतलब वो होता है कि शुरुआत उसकी ताइवान से ही होगी, और अगर ताइवान के साथ वो लड़ाई कर रहा है तो क्या इंडिया को वो छोड़ेगा? कहीं न कहीं उसकी जो स्ट्राइड में इंडिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा या वो इंडिया के ऊपर भी कुछ ऐसी हरकत कर सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी जो हमारे एनवायरनमेंट में न्यूज़ आइटम्स छप के आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन जर्नल्स हों या चाहे अमेरिकन पेपर्स हों या फिर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के आर्टिकल्स हों, इस तरह से कई सारे आवाज़ें जो हैं अमेरिका एंड चाइना दोनों तरफ से आ रही हैं। तो इसके बारे में मैं जस्ट थोड़ा-सा एक आपको एक प्रेज़ेंटेशन दिखाऊँगा जिससे कि हमारे ऑडियंस भी जान जाएँगे कि हम क्यों इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि ये कार्टून दिखा रहा है कि द ड्रैगन इज़ फेसिंग the Uncle Sam and the tiger, which is us, and probably showing eyes. बट इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें मिथ है या कितना कितना ये खाली इंफॉर्मेशन वॉर है, ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये क्या है, ये बातचीत क्या हो रही है। लेकिन इसका जो बेसिस है बातचीत करने का आज का, वो मैं इन सब चीज़ों से बताना चाहता हूँ कि ये हेडलाइंस आजकल के जो इंटरनेशनल पेपर्स में क्या आ रही है, और ये पिछले 2-3 महीनों की ही हेडलाइंस हैं, ज़्यादा पुरानी हेडलाइंस नहीं है। और इंडो यूएस जो मीट हुई थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बाइडन, उसके बाद से ये ज़्यादा बढ़ गई है। आप समझ सकते हैं लॉजिकली कि ये क्यों इस तरह की आवाज़ें ज़्यादा उठने लग गई हैं। चाइनीज़ मिलिट्री कंजोर्स वर्ल्ड वॉर ज़ोन सिनेरियो ऑफ एन ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट टू टेस्ट एंड इवैल्यूएट न्यू नेवी वेपन्स। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक आर्टिकल है जिसको कि वहाँ के एक साउथ एससीएमपी के डिफेंस एक्सपर्ट ने लिखा है, एंड ही इज़ बेस्ड इन चाइना। ही इज़ बेस्ड नॉट इन हांगकांग बट ही इज़ बेस्ड इन चाइना प्रॉपर। इसी तरह जी जिनपिंग क्वाइट क्लियर, चाइना प्रिपेयरिंग फॉर वॉर सेज रिटायर्ड यूएस जनरल एचआर मास्टर, यू नो ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे पहले। पेंटागन इज फेकिंग out about freaking out about a potential war with dash dash dash, you know, US is what they are referring to. This has come in their Politico magazine. It's a very very detailed article in which they are giving out the reasons why कि क्यों ये अमेरिका इस समय ऐसी हालत में है कि चाइना के साथ लड़ाई करने के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। ये एक अमेरिकन मैगजीन है और ये काफ़ी वेल नोन मैगजीन है। इसका इनफैक्ट एक यूरोपियन वर्जन भी पब्लिश होता है। एयरफोर्स जनरल प्रेडिक्ट्स वॉर विद चाइना इन 2025। इसको पहले 2027 बोल रहे थे, नाउ दे हैव शिफ्टेड इट टू 2025। उसका बेसिस क्या है?
उसके बारे में भी हम थोड़ा जिक्र करेंगे। देन प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट इंडिया चाइना बॉर्डर क्राइसिस, रैंड कॉर्पोरेशन। तो रैंड कॉर्पोरेशन ने भी एक आर्टिकल निकाला है इंडिया चाइना के इशू में कि भाई चाइना इज आल्सो लुकिंग एट इंडिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटेंडिंग इट्स और somehow dominating its regional competition, which is India. Xi Jinping says he is preparing China for war. The world should take him seriously. अब ये जो आर्टिकल आया है, ये भी एक वेस्टर्न मैगजीन में आया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी लोगों को काफ़ी लोग इसके बारे में लिख रहे हैं कि भाई चाइना इज़ गोइंग टू बिकम more and more aggressive in the times to come, and we will not talk about the three global initiatives which you have already discussed. Various platforms have discussed this, but ये एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो वॉर गेमिंग चल रही है यूएस की जो सेलेक्ट कमिटी ऑन द हाउस ऑन द कंपटीशन विद चाइना। और उसमें से एक का सिनेरियो मैंने लिया है जस्ट समझाने के लिए कि लड़ाई सुबह सुबह शुरू होती है, मैसिव बम्बार्डमेंट, चाइना की जो शॉक एंड ऑ की पॉलिसी है उसके तहत, इससे पहले कि अमेरिका को इसकी भनक लगे, ताइवान का पूरा एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी पूरी नेवी खत्म कर दी गई, और यूएस को समय नहीं मिला ताइवान को डिफेंड करने का इफेक्टिवली। और इस लड़ाई में जब यूएस ने काउंटर ऑफेंसिव किया तो उसमें तकरीबन उसके सारे जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट बेस्ड सिस्टम्स हैं, वो तकरीबन खत्म हो गए हैं, और यूएस के पास कैपेसिटी नहीं है कि ये तुरंत इसको प्रोड्यूस कर सके। और इसको ये लिंक कर रहे हैं उनकी वीक मैन्युफैक्चरिंग से, जो कि इस समय काफ़ी स्ट्रेस में है यूक्रेन वॉर की वजह से, बिकॉज दे हैव गिवन ऑलमोस्ट $50 billion ऑफ एड, विच इज़ मोर इन टर्म्स ऑफ द काइंड, kind in terms of weapons, etc. So therefore that stress is likely to hamper their response to China, and therefore China is getting emboldened. And ये चाइना कर रहा है कब, जानते हुए कि रशिया की क्या हालत हो रही है यूक्रेन में, उसके बावजूद भी इस तरह की ये बातचीत चल रही है। कुछ और लोगों ने, जैसे वहाँ अमेरिका की कुछ जनरल्स की जब बात करें हम, चाइनीज जस्ट रैन rings around us, said former Joint Chiefs of Vice Chair General John Hyten in one of the after action report. आप जो बात कर रहे थे कि कुछ देर पहले about the the naval blockades, etc. So he has commented on that in this manner. Or there is another report which says, all of a sudden Washington is reckoning with the fact that so many parts and pieces of munitions, planes, and ships it needs are being manufactured overseas, including China. Among the deficiencies, components of solid rocket motors, self casing, मशीन के जो टूल्स होते हैं, फ्यूजेज, परकर्सर्स, इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं उनको इस समय कमी पेश आ रही है, और इसमें काफ़ी कुछ की मैन्युफैक्चरिंग चाइना और इंडिया दोनों में होती है। तो इंडिया से तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इंडिया और यूएस की जो अभी जो मीटिंग हुई है, जिसमें जो हाइप किया गया है, ये भी एक कारण हो सकता है कि क्यों इंडिया एंड यूएस नज़दीक आ रहे हैं इस मामले में। नेक्स्ट अगर आप देखें, इट इज़ वेरी अनसेटलिंग टू सी हाउ मच द यूएस इज नॉट कनेक्टिंग द डॉट्स ऑन आवर नंबर वन चैलेंज। सो आप, मुझे कहीं ना कहीं हमारी इंडिया के 20 साल पहले की बात याद आती है, जॉर्ज फर्नांडिस की, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि चाइना इज आवर इंडियन एनिमी नंबर वन, एंड वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू बेसिकली प्रिपेयर against China. Something like that is happening also in the US. This is a statement by Rear Admiral Mike Studman, and he is the Navy Intelligence Chief of US. The United States believes that Chinese President Xi Jinping has ordered his military to be ready to invade Taiwan by 2027. ये CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की स्टेटमेंट है। उसी तरह से वी कुड थ्रो $1 trillion a year at the defense budget now, and we are not going to get a meaningful increase in traditional military capabilities की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो उनके जो कन्वेंशनल सिस्टम्स थे वो थोड़ा इस समय अंडर स्ट्रेस हैं, एजिंग हो रखी है। इन द नेक्स्ट 5 years, दिस इज टोल्ड बाय वन ऑफ द देयर चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर एंड्रूल इन क्रिस्टियन ब्रोस, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर एंड्रूल इंडस्ट्रीज, he's from the defense lobby, so to say. So similarly, you have many others who are giving this kind of a statements. I will not go into the details, but all of them are cautioning the
the public or the government of United States of America that they need to prepare for confrontation with China, and there are similar noises coming out from China as also from India. So, with that as the background, I would now request you, sir, to first of all, uh, the basic question which I want to ask is: China really having this intention of going for a total war, at least in the 2027 scenario or 2030 scenario? That is the first question. You can take your own take and start answering from the way you like to answer. See, ever since Xi Jinping has taken over, his message to his PLA has always been be prepared for war. Absolutely. Right. Absolutely. So if you look at all his talks, every talk that he has given to PLA has been to prepare for war and to win the intelligence-sized war. He Yes. has told them From to prepare for war. So there is, I think, a reason why this hype is also coming up now at this stage. Suddenly, everybody has started commenting. Earlier, they didn't comment so much. My take is slightly different. There are three major yeah. elections that are coming up, very major, Yes. especially relevant to the Indo-Pacific. First is in January, you have the Taiwan president election, and there are two main parties and one new party which has come up: the Democratic People's Party, Tsai Ing-wen's party, which is there now. Tsai cannot stand because she has already won twice. Yeah. So So they have a new candidate, Kai Chin-lei. Now, Kai Chin-lei wanted to stand last time, but didn't win the primaries. KMT is Hon. Now, KMT, uh, while the Chinese think that they are pro one China policy, but actually KMT has the fond hope of winning back the mainland, ah, going back to pre Civil War days and winning back the mainland. But they are not for independence. While Kai Chiling was Chingli always wanted independence, but he has taken a sort of a centrist part like Tsai, that we are already independent, so we don't need to go down that path and declare ourselves independent. Uh, yeah. she said practically we are independent. And the new party, Ko Wen-je, who has come, ex latest mayor of Taipei, he would be more like a spoiler. And the Chinese would want, the mainland China would want the KMT to win. So this is the kind of pressures that they would like, the Communist Party would like to put on the Taiwanese people. But when you read the Taiwanese newspaper reports and their net, and you find that the youth, because of these pressures, though they have a lot of filial linkages, because even today about 5 lakh annually marriages take place, because they are also Han. So Han ke liye kahan jayega? Wo, he has to go to the mainland. So रूट्स there तो are वही है. cross strait marriages taking place. But despite that, the youth is slowly getting angry with CPC. Now, how much he can, because there is a, in economics, like we had learned, diminishing marginal utility. The pressures may have worked earlier, but is it working now? Because the youth is not now with the KMT. So that's one thing. The other is the US presidential elections, whose primaries will start sometime Uh, towards the end of the year. so what you are trying to indicate here is that there may be a change of approach from Taiwan should the election results be not in favor of KMT? Oh, no, no. Yes, the Chinese. See, Xi Jinping has painted himself into a corner. Is my what I am saying. He's Okay. putting all his eggs in one basket, keep pushing for KMT. Now, what Hmm. happens if KMT doesn't win? Will he attack? I'll come to it later about the Okay. capability of the PLA. Okay. As what I have read is the various analysis of the two events which took place last year when Nancy Pelosi came there, and this Absolutely. year, now when Tsai visited US, what happened in April.
Correct. So the other aspect which they are very worried about is the US presidential elections 2024. Yeah. Okay. Now, what is coming out within the Democrats is, despite the advice against signing the agreement by Hillary Clinton and Obama, Biden has pushed his way ahead and signed this agreement with India. Yeah. Hillary Clinton and Michelle Obama are not on the same page. Yeah. And there are reports coming out that both Michelle Obama and Hillary Clinton want to run these elections. So Yeah. there But is a lot of foment within the Democrats. Similar is there in Republicans. yeah, Trump that's versus who? DeSantis Trump. and the whole lot. Okay. Yeah. So come October, all these are going to take place. And I'm sure the Chinese, who have a lot of their own, you can say, subverted intellectuals who are going around in the US, and a lot of funding is going on, they would also like to get somebody who might ease off the pressure on China. So, what do you think? I'm sorry to interject, sir. What do you think? Whom is Xi Jinping pitching for? I mean, this is a very interesting point which you have brought out. So, Democrats, because something, Democrats, but not Biden. not Biden. Not Biden, because Biden has signed the agreement with India. See, Okay, right. I'll just give the context which I take as a defense analyst. Why did Biden go ahead with these agreements? We have already done a whole lot of agreements with the what is Yeah, required, your Comcasa, Limoa, and all that, Beka. We have already signed that. you've signed most of it. What people don't know is, as to check whether we could become the victualling base, L&T had already last year, their ship had landed here, and L&T was doing their complete Yeah. overhauling and maintenance. That is Uh, success. They have signed it with L&T. They are going to sign it with Goa and Mazagon Docks also. Mesgon Dock also they're signing. And then when we look at GE, don't look at it. People are hyping it up over Tejas Mark II. Yeah, there are Except for, other. except for the F-22 and F-35, their other F-15, F-16, F-18 all use GE. Correct. Right? Similar or same engines. Like Yeah. F4, 414 is G F-18s, Yeah. which are all deployed here. Now you have huge Navy, and if you have the Navy overhaul and repair base available here, then in time of war in South China Sea, if Americans have to stand up in support, India becomes the victualling hub, the logistic hub for these forces. That's true. That's true. That's Predator true. is also coming with your MRO capability. Correct. So you will become the hub, and which is what the Chinese are getting worked upon, because in any case, post the lessons of COVID, they won't have one global supply chain hub, but India is coming up as a major global supply chain hub in the region. That's right. Already iPhone and Foxconn have moved out. Now you, But sorry, sir. Sorry to yeah, interrupt here, sir. It's seen normally. It is seen in the US that whenever there is a national security issue, even if the government of the day of the United States may have not been party to the agreement which was signed in the past, by and large they stick to their national interests. So I here, don't think there will be any major change as far as the India US agreement for these activities are concerned. no, in this, there is, I would say, there is a slight hesitation as far as the State Department is concerned, Okay. because of a rising India which is having its own strategic autonomy. So that is not liked by the State Department. But the Department of Defense is very clear that for the Yeah, Indo Pacific, they need India. They that's right. cannot do without India. That's right. That's right. And so that has been the push, not the State Department. Yeah, State Otherwise, if Department. yeah, if State Department was so keen, why did they send this person Garcetti, who has taken such an anti-India stance when he was in State Department out there? Yeah, that's right. He was singing all the anti-India tune.
But today, because the president is pro-India totally, he's not able to sing an anti-Indian tune here in India. But if you see, the Biden himself has shown us so much of change from the last 4 to 5 years, Yes, from a yes, kind of a neutral India to now it is almost a pro-India, pro total. India, total leaning towards India. Yes, So I think the times should be dictating what will happen in the future. So go ahead, sir. correct. No, I'm just saying what the Chinese would want is not Yeah, going to obviously. happen the way they want. Yeah. Similar is our own elections, which are going to come up in 2024. Yes. But then the biggest issue is who is the opposition? वो जुड़ते हैं टूटते हैं दो while we may laugh and say कि ठीक है it's good for the BJP, but नहीं, in the larger perspective for democracy you must have a viable opposition. yeah, and while constructive opposition, absolutely Most welcome. must must But be must then be there. the whole problem when you see these 2-3 people who join up that we are joining to defeat X. I'm That's sorry, yeah, that that is is that is wrong. that is the wrong Danger. narrative they are spreading. Yes. Yes, because They must create he their own has narrative. given a particular perspective of how he looks for Ab- development of the country. You come out Absolutely, with your alternative. yeah, and people will choose which one is better. Choose. Now, if you say that we are only joining to defeat this chap, then people are reminded of the 1977 exercise when they joined up to defeat Indira. What happened? And it fell It apart like a collapsed. pack of cards. Yes, pack of cards. This is what will happen. So, Yeah, but he is also worried because a stronger Modi is again not, he thinks it is not in his interest. yeah, And 2027, 2027, because that is when he will be pushing for his fourth term. Xi Jinping is pushing for his fourth term and yeah, he's facing a lot of problems. He has a declining economy because people are not using the term decoupling. They are talking of de-risking, de-risk, de-risking. friend-shoring, near-shoring, but Yeah, ultimately it is decoupling from China. it's Though basically it that. is not that China will be left high and dry. Yeah, That is my understanding. It will continue to have some hubs because in any case, if you look at Taiwan, if you look at Korea, if you look at Japan, they still have a lot of MSMEs which are based on mainland China. yeah, Economically, it doesn't sound logical to them to take it too far away into South China Sea or get into India because it is next door, just across the North Sea and Yellow Sea, and they're there. okay. But the quantum of MSMEs which were then based in China will not be there, and they are feeling the impact because the eastern seaboard, the port activity has fallen drastically, quite drastically. So that is the cause of concern, and that is increasing internal pressures on him. He has created his own external pressures by going aggressive against India, South China Sea, East China Sea. So what he is facing now is a multi-domain threat of self-creation, Yeah, right? And yeah. what he thought that Pakistan could be a spoiler against India, suddenly he is finding it may not be. Pakistan has become a baby which he is holding and doesn't know whom to give it to or whom to pass it What on to to. do? He thought it would be a spoiler for India, but Yeah, it's just absolutely. collapsed now. Yeah, And whatever his anti-India rhetoric had been, like I said earlier also, the laws of diminishing marginal utility, you can utilize it for some time. उसके बाद people say यार narrative. ठीक है सुनी सुनाई है, say something new आ जाता है. दूसरा नैरेटिव चलाइए, उसकी बात होने लग जाती है. So this is the issue. Now I will just assess PLA का status क्या था. हाँ, कैपेबिलिटी के ऊपर थोड़ा बातचीत करनी चाहिए. Now, one thing we have to know that while Nancy Pelosi के time में he fired missiles, this time he did not fire. Why not? Every time there has been some stink across the Taiwan Strait, he has used Hello. missiles. But this was one time when he didn't use missiles.
there was a reason, because the last time when he fired, almost about half of the missiles went awry and landed near Japan. Japan, yeah, that was Now a he very is worried about the accuracy of the guidance system of his missiles. and the quality. I mean, that's a huge statement which comes out. Comes out. Ki bhai, so suddenly you find that's why what the Americans said, he fired all those missiles. I have my doubts, because this was the first time no missiles were fired. Yeah. Now, this time they openly said they are going to do an exercise, blockade of Taiwan. Yes. And for the first time, their own, not Liaoning, Shandong, their aircraft carrier, Yeah, went east of Taiwan. that's right. That's Now, right. let us look at Shandong. Went for trials in 2018, handed over to Southern Fleet in 2019. 2020 से दालियान शिपयार्ड में बैठा हुआ है. It didn't म्यूजियम go बन out. गया अभी। कुछ लोग बोल रहे हैं वो म्यूजियम बन गया है। अब उसके बाद I'll give you my rationale also ना. उसके बाद this was the first time it went out for the exercise. यार, you are taking out an aircraft carrier, वो पूरा carrier battle group साथ के चलता है. No destroyer from South China fleet escorted it. They have, I think, 9 of the latest destroyers. कोई नहीं गया. एक छोटा कॉर्वेट गया था और एक लॉजिस्टिक शिप गया था. साउथ चाइना, द साउथ फ्लीट हैज अ वेरी स्मॉल लॉजिस्टिक फ्लीट. सो वन ऑफ द असेसमेंट बाय द नेवल एक्सपर्ट हैज बीन दैट maybe because the logistic ship is small, they were not able to support the destroyers, so the destroyers didn't go there. But I have a different take. यार, एक्सरसाइज तो 3 ही दिन का था. कौन सा लॉजिस्टिक्स बैकअप चाहिए आपको? सेल्फ कंटेन्ड रहेंगे ये। Self contained 3-day exercise, and you Yeah. want a logistic backup. That's Next, right. That's right. then over 3 days from Shandong, total launches, helicopters 40, aircrafts 80. यार, हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ही एक दिन में 100 के करीब लॉन्च कर देते हैं. आपने कहीं 3 दिन में 80 लॉन्च किया. कहीं कहीं इनके अंदर वो अभी भी घबराहट और वो है, Yes. यू नो, ट्रेनिंग वो एक बहुत ट्रेनिंग बड़ी कमी है, बिकॉज पहले भी यू कैन रिमेम्बर दे वर पोचिंग अ लॉट ऑफ दीज वेस्टर्न पायलट्स टू ट्रेन. करेक्ट। सो हेक्टर भी 40 ही लॉन्च किया बिल्कुल 3 दिन में. इन्हें नॉट इवन 20 इन अ डे यार. और दिन में किया, रात में किया ही नहीं, which tells you that their pilots are not trained for night landing. तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? बिल्कुल बिल्कुल And how can you fight a battle and say that I am going to blockade? एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला है, आप ब्लॉकेड करोगे तो आपके तो सारा शिपिंग लेन्स ब्लॉक हो जाएगा. बिल्कुल। तो वही मैं बात बताना चाहता हूँ ऑडियंस को भी कि भाई देखिए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर में से जिसमें एक तो उनका ऑफ रोड ही रहता है, वो कहाँ से बात करता है आईओआर में जाकर के कुछ करने की। लड़ेगा. आईओआर में जाने के लिए उसको पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा बाहर, और यहाँ से निकलने की इस समय उसकी क्षमता तो नहीं है ऐसे। नहीं, अगर निकलेगा भी तो उसको आईओआर में ऑपरेट करने के लिए तक पहुंचने के लिए लॉजिस्टिक शिप्स चाहिए, क्योंकि वो शिप्स को वेदर लुम्बॉक स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट या मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू निकलना है, 72 घंटे कम से कम लगते नॉर्मल शिप जो चलता. बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सबसे दूर वाला जो स्ट्रेट है, वहां से तो जाना, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज very very एक्सरसाइज, long. एंड ऑस्ट्रेलिया Then विल बी इन द रूट। yeah, then there were 2-3 things which were really funny. What the Taiwanese Navy was indicating, the ships that were operating, that corvette which was there, they ran out of drinking water. Don't tell me. They, with their flag and other things, they were requesting, begging literally the Taiwanese ship कि हमको पीने का पानी दे दो. Right? And they've gone in for a blockade exercise. Blockade exercise. And Who's then getting the blocked? other aspect which the Taiwanese were saying, that they were requesting that let us come close and take photograph of your ships, because we have to tell them that we came close to you and took a photograph. अगर फोटोग्राफ नहीं ले पा रहे हैं तो आप हमको फोटोग्राफ भेज दो.
नहीं, तो ऐसे थोड़ी यहाँ पे ब्लॉकेड होता है। सर, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसका मैं लैंड से थोड़ा लिंक करना चाहता हूँ, सोल्जर्स की क्वालिटी के ऊपर। जब यस, हम बात करते हैं लैंड बॉर्डर्स पे कि उनकी सोल्जर्स की क्वालिटी कितनी डाउन हो रखी है, वन वन चाइल्ड नॉर्म वगैरह की बात हो रही है, वो नेवी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो बहुत सेम। बढ़िया पॉइंट आपने दिया है। सो this is the other issue is he can't, okay, he is saying ki bhai be prepared for war. That doesn't mean he is given orders for war, because you यस, and I know there are a whole lot of battle indicators which come up in the preparation for battle. Nothing has come out as yet. And there is a big question mark on the war waging stamina of China, लॉजिस्ट, because I was going through, even when I was writing my book, I went through a lot of studies done by the Americans and the Taiwanese. A very earth shattering report came out which says that their air force does not have a rotable logistic chain. All their units are given extra aircrafts to cannibalize and fly. ओ, इवन द रशियंस के जो ले रखे हैं Su-30, वो एक्स्ट्रा ले रखे हैं, Su-27 भी एक्स्ट्रा ले रखे हैं. All the aircrafts that they are giving them, the platforms they give extra. If their battalion is supposed to have, let us say, 12, they will give them 16 कि आप cannibalize करो. अब cannibalize करके इस तरह से तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते यार. इस How do समय you तो fight this? रशिया की हालत इस समय उसी तरह की हो गई है, बिकॉज इट इज बिल्कुल. लुकिंग फॉर स्पेयर पार्ट्स एंड इट हैज नो ऑप्शन Yes. बट टू गिव ओल्ड एयरक्राफ्ट फॉर Whereas, कैनिबलाइजेशन। correct, but whereas what is happening with China is only concentrating on creating more and more new platforms. There is a reason. I will play the devil's advocate. More than 50% of his aircrafts are the old J7 variety, या, which don't have air-to-air refueling capability, which are old vintage. So he needs new platform. So instead of striking a balance between op logistics and platforms, he's gone the platform way. Same is the case with Navy. He's going the platform way, outstripping the trained soldiers who are required to man those platforms. So या, he doesn't have trainers also. New up technology la rahe ho. That is why you are poaching pilots and all these people from the West कि भाई हमको आके सिखा दो. and इस समय रशिया is so deeply involved in its own war that I don't think it is in a position to help China in any major way. No way. Russia, in any case, even if Russians were there to help, they won't come. They have their own issues inside. That is the Correct. reason why they used Wagner and now Chechens have come to fight them. Absolutely, To absolutely. put it in perspective. Yeah. So, and the other issue that they have, two more issues I will flag, that in the senior lot, he has gone for merit and not a loyalty and not for merit. Yeah, So that is the the capability now becomes a big question mark. his entire Politburo is absolute chamchas of Yes, and even the senior hierarchy is loyalty to him and loyalty to him. He is not looking at loyalty to CPC, loyalty to him. So then merit takes a big hit. And when yes. people are worried that if I don't follow his orders, I'll be sacked, then modern wars, which are so fast moving and you got to take decisions on ground, directive style of command to hoga hi nahi. It will be authoritative. They will keep looking at. Then last point on this is the conscription. Earlier, uh, every year September, October was when he used to do the conscription. So October, November, December, the basic training is to be done. Jan, Feb, March was when the unit would have trained the soldiers. So from March till September, he had 100% people available who were trained at various levels, trained, and you could say that there were no recruits. Now he's Yeah. changed it to twice a year. So you will never have 100% soldiers available. So you will be in a turmoil, kind of a. You are always in a turmoil. Yeah. So that doesn't augur well for. You may write many things of modern fighting and this, that, but get trained soldiers you won't have.
सो इसमें आ जाता है कि बिकॉज शी आई फील इज इन अ प्रेशर, व्हाट डज ही लुक as his, what is his, like we keep asking, a notion of victory, हम पाकिस्तान के बारे में बोलते थे, तो अब यहाँ पे आता है what is she's notion of victory. I must highlight this factor for our people or for our public. ये देखिए जो नोशन ऑफ विक्ट्री की बात की है नारायणन ने, वो हम इसलिए बोलते हैं जबकि कोई लड़ाई का नतीजा नहीं हो रहा है, तो हम ढूंढते हैं अरे कौन सा चीज मैं उठा लूं, कौन सा सब्जेक्ट उठा लूं इस पूरी लड़ाई में जिससे कि मैं बोलूं कि मैंने जीत हासिल कर ली है। तो हमने आज इस डिस्कशन में जनरल नारायणन ने चाइना को ऐसी हालत में ला दिया कि किसी फ्यूचर की लड़ाई में वो ढूंढेगा कोई इशू की जिसको बोल करके वो बोले कि वो जीत गया है या उस लड़ाई में जीता है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात जनरल राजीव नारायण ने बोली है। मैंने थोड़ा हिंदी में समझाने की कोशिश की है। हाँ, नोशन ऑफ विक्ट्री का मतलब क्या है? हाँ, तो ये नोशन ऑफ विक्ट्री है कि भाई इसमें निकल आता है कि अगर ऑल आउट वॉर करने की काबिलियत नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कब्जा करके बोल दूं ये देख मैंने कब्जा कर लिया। बिल्कुल राइट नाउ अब वो लैंड ग्रैब आता है किधर? इंडिया, ताइवान, साउथ चाइना सी, किधर करेगा? इंडिया के अगेंस्ट कोशिश तो की थी, अटक गया है, और ऐसा अटका है उसको समझ नहीं आ रहा है कि निकलूं कैसे। बिल्कुल। अच्छा, तो अब इसमें ये मेरा मानना है कि 1955 में बिल्कुल बीच में ताइवान स्ट्रेट्स के एक मीडियन लाइन अमेरिकन ने खड़ा किया था। उनका एयरफोर्स जनरल है बेंजामिन डेविस जूनियर, उसको कई अमेरिकन डेविस लाइन भी बोलते हैं, और ये इसका टेसिट एक्सेप्टेंस है सब तरफ से। और अमेरिकन का ये लाइन है कि इसके अगर आप ईस्ट आ जाओ मतलब हम सोचेंगे कि लड़ाई होने वाला है ताइवान के ऊपर। और अभी भी जब ये बोलते हैं ताइवानीज की इतने ब्रीच करके आ गए, इतने हमारे टेरिटरी में आ गए, वो मीडियन लाइन के अक्रॉस बोलते हैं कि मीडियन लाइन के अक्रॉस आए हैं, क्योंकि नहीं तो अडीज के साथ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उनका जो अडीज है वो तो चाइना मेनलैंड के ऊपर चला जाता है। बिल्कुल। नो, इसमें 3 आइलैंड ग्रुप हैं ताइवानीज के जो बिल्कुल मेनलैंड चाइना के पास है। नीचे के ऊपर एक किनमेन है, वो तो बिल्कुल ही मतलब 6 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम मेनलैंड चाइना, बिल्कुल चिपका हुआ दूसरा है बीच में वूचियाओ और ऊपर है माट्सू, और एक है तकरीबन अराउंड मीडियन लाइन या मेरे हिसाब से थोड़ा ईस्ट है मीडियन लाइन से, वो है पेंगू। तो मेरा मानना है कि अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा तो ये जो 3 है किनमेन, वूचियाओ, माट्सू, तो ये नोशन ऑफ विक्ट्री होगी, बोलेगा कि मैंने ताइवान के हिस्से पे कब्जा कर लिया। ये नोशन ऑफ विक्ट्री होगी उसकी नोशन, बिकॉज किनमेन आइलैंड, आई थिंक माट्सू आइलैंड का उसने अप्रैल के महीने में उसका जो अंडर वाटर लिंक केबल था, कम्युनिकेशन लिंक केबल, उसको काट दिया था। तो ये उसका नोशन ऑफ विक्ट्री हो सकता है कि मैंने कर दिया। कब करता है? मेरा अंदाजा है या तो 2024 के इलेक्शंस उसके जो चाहता है वो नहीं हुआ कि केएमटी नहीं जीता वो, या 2027 उसके चौथे टर्म के पहले, उसके इलेक्शन के पहले। हाँ, उसके इलेक्शन तो नहीं, सिलेक्शन बोलेंगे उसका, तो वो तो अपने आप को सेलेक्ट करता है। वो भी नोशन ऑफ इलेक्शन होता है ना कि पूरी कांग्रेस मीट करती है एंड देन दे डिसाइड ओके ही इज गोइंग टू बी नेक्स्ट चेयरमैन एंड व्हाटएवर, यू नो, देयर आर 3। वही उसका एक his major dilemma, if I look from his side, is what does he do if the DPP in Taiwan, BJP in India, and either the reps or Republicans or Biden comes win the elections, then what does he do? Then it is one versus the rest. He is actually, with his aggressiveness, he's painted himself in a corner. He's one against the rest. Yes, because he remembers when Nancy Pelosi वहां पे लैंड करने वाली थी, क्या क्या बोला था, जहाज उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब कुछ नहीं किया तो सोशल मीडिया में उसके अगेंस्ट कितना निकल आया। जब कुछ कर नहीं सकते तो बोलते क्यों?
मुझे कहीं ऐसा लगता है, दिस इज अ एडिशन टू व्हाट यू आर सेइंग, दैट Pelosi's visit, I think, emboldened Biden. Remember, before Pelosi's Yes, visit, Biden was not very comfortable with Pelosi visiting, But yes, after the outcome came out, then Biden became suddenly a changed man. बिल्कुल चेंज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बाइडन का टोटल पूरा एटीट्यूड उसका चेंज हो गया। वो स्टैंड चेंज हो गया। वो नहीं तो लड़खड़ाना भी उसके बंद हो गया। पहले लोकल टर्म्स में हम जब डिस्कस करते थे उसको पलटू राम बोलते थे कि उसका आज कुछ लड़खड़ाना बोलेगा, बंद हो गया। 24 घंटे बाद कुछ और बोलेगा। दूसरा कुछ बोल, उसका लड़खड़ाना बंद हो गया। ही बिकेम मोर हाँ, सब बंद हो गया। डिसाइसिव इन हिज अप्रोच। यस, आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी डिसाइसिव। डिसाइसिव पॉइंट। सो बट यू नेवर नो, ये तो हम एज अ मैच्योर पीपल हम बोल रहे हैं कि ये मैच्योर आदमी का रिस्पॉन्स है। इज बिल्कुल, मैं शी अगला जिनपिंग क्वेश्चन मैच्योर? वही था। मेरा अगला क्वेश्चन ही वही था कि हाँ, बट इज शी व्हाट इज जिनपिंग मैच्योर? व्हाट इज तो द अब वाइल्ड वो कार्ड? तो है, इफ ही गेट्स पेंटेड इन अ कॉर्नर like Mao, he will attack outside. So, as far as India is concerned, whatever be the case, you cannot afford to let your guard down. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। You cannot afford to let your guard down. और एक और चीज वो कर सकता है शायद, अगर थोड़ा और टाइम लेके अपने पीएलए नेवी को थोड़ा और स्ट्रांग करने के लिए, कि भाई एक अडीज बना दे ओवर साउथ चाइना सी। ओके, ईस्ट चाइना सी के ऊपर तो उसने बना दिया, साउथ चाइना सी के ऊपर बना दे। उस पे भी तो बना दे। हाँ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है रीजन के लिए, एंड खास करके शी जिनपिंग के लिए। हालांकि अभी ये है कि अनलाइक अर्लियर टाइम्स, नाउ द बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी across the LAC is vast, and post Galwan और ज्यादा हो गया है, and his worry will be once the predators and others come, the transparency will increase further, Increase even further. It is increase also, further. yeah, And it the is agreements that we are having with correct. the Anglo-Saxons, उनके फाइव आईज हैं ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग, satellite imagery sharing, so there will be a lot of information coming in. So how does he attain strategic and operational surprise? So more and more उसमें जाता है मेरे को कि while we should be careful because he could do some incident like this again, like जैसे गलवान वाला किया है, some other place he could do it. But for me the P1 will be those 3 islands. Okay, He doesn't need much of a build up. They are right correct. next door to him, Yeah, and easy grab, easy grab, easy grab, easy easy grab. grab for him. But what we should be doing is जो उसके critical logistic nodes हैं build-up के लिए हमारे side में, उनके ऊपर वो हाँ सर्वेलेंस। उनके ऊपर, because there are two things, he might spread it over 2-3 years. Yeah, तो and कितना build-up, that will be हाँ more कितना, dangerous to us. यस कितना चाहिए बिल्डअप के लिए, एंड पीरियोडिकली गाड़ियां आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्या हो रहा है, वो ट्रेन आके रुक रही हैं नहीं हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, वो उसका ध्यान रखना है। वो ये नहीं करेगा कि एक, जैसे हम बोलते हैं कि अब उसकी काबिलियत तो अब बढ़ गई है बिकॉज ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक सीजन में अटैक कर दी। पहले हम बोलते थे 2 सीजन, अभी एक सीजन में कर लेगा, लेकिन एक सीजन में नहीं जाएगा, शायद 3 सीजन ले ले, बिल्कुल। कि शायद वो धीरे धीरे बिल्डअप करे एंड होप दैट आपका गार्ड डाउन हो जाए। And even if not, if it is preparing for over a period of 3 years, I think it will have some dent making capability in our तो defenses. छोटा मोटा तो वो करेगा ही करेगा, वो तो मैं कह रहा हूँ गार्ड तो ऊपर रखना ही है। तो गलवान देर टाइप इंसिडेंट तो कहीं भी कर सकता है वो, बिल्कुल, बिल्कुल। बट बाकी के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं वो कुछ करने की कोशिश ना करे। एंड खास करके मेरा अंदाजा है कि द पीरियड 20 between 25 to 27 will be the crucial period as far as India is concerned, where you have to be careful. Thank you, sir. In fact, we have had a very interesting discussion. Basically, what I wanted from we wanted from this particular discussion was कि हम ये सच्चाई बताएं कि भाई जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं कि चाइना हमारे पर हमला करेगा,
और अमेरिका के ऊपर हमला करेगा, अगर अमेरिका के ऊपर हमला करेगा तो हमारे ऊपर भी हमला कर देगा। इसमें मैं एक और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन ऑडियंस के सवाल इतने सारे हो गए हैं कि आई थॉट लेट्स टेक ऑन द ऑडियंस क्वेश्चंस, उसी जी। में some of our doubts would or some of the questions will get answered. So we have, sir, first question is a comment, basically just for the information. I can just share it with you. I was also aware of it. If one notices it is all US assessment, let us see how our own experts view Sino-Indian relations. I think we have covered this entire perspective in the after wearing Xi Jinping's hat, and hopefully, hopefully Xi Jinping is listening, or this kind of a program will somewhere trickle down to global times, and they will do something about it. Right, sir? Then we have there is a question again from Jan Chaturvedi. Probably US is quite seized with China and their attention they are sharing. Now, this was a question which I wanted to ask you also. What is the basis for overhyping the Chinese threat in the American polity? I mean, Select Committee of the House is a very big forum. Why are they repeatedly playing war games in which they are showing US as having gone to the dogs? Which is something which I was quite So and so therefore you may like. I feel Ajay Chaturvedi sir, very good question you have asked. My personal assessment is the military industrial complex wants more money. That is one. बिल्कुल But the बिल्कुल State Department, this is the only region where there is no major strife going on left. yeah, If you look at the world island completely, all regions are now in strife except this region. absolutely. और यहाँ पे वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाए, कहीं हो जाए, तो all the regions are on strife, and whom will you look towards for help? To the US. Absolutely. In And the fact, few, US will in fact, not need to put boots on ground. They yeah, will send waging material to everybody, or up they will बिल्कुल. prefer that everybody else fights till their last soldier so that they are left standing. Last man They are standing. doing they are doing this with Ukraine, till the Yes, last Ukrainian Ukrainian is will standing. continue वो supporting लड़ते you. रहेंगे. We will And continue supporting you. look at what has happened to the European economy today, where it has Yeah, gone. they have And gone to dog. immediately after the signing of the agreement, already voices are coming from their experts that the Indian ships will be there fighting in South China Sea. अरे why the hell should I fight there? आप हो वहां पे, आप लड़ो यार. I think we have made it very clear that we will be the net security provider in the IOR, and आयो यार. that's our आयो responsibility. यार. We'll take care of it. You take care of the Asia Pacific if you want to do, and with of course Australia and Japan chipped into it. I think they are capable of looking after I themselves. think that is the reason why they created the IP4 ना. Yeah, एक और कॉड बनाया ना, IP4 बोलते हैं उसको. जापान, अच्छा. साउथ कोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, आई थिंक. अच्छा, ये नया वाला बन गया अभी. I हाँ was हाँ, this IP4 दे कॉल इट. after I2 U2, now this is IP4. IP4 Okay. because I India is not coming there ना, so need something for the Western yeah. Pacific, तो ये Although we IP4 did, बना. although we did go to New Papua Guinea. So there's another question which is like, ask, sir, this might seem naive, but is there any chance of getting back Aksai Chain and other areas lost in 62? CCP's leaders change, but policy doesn't. Is there any political or military solution to it? I think this was not related to this particular thing, but you can take on, sir. Try to, कोठारी जी, सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, सीसीपी का पॉलिसी जो आप बोल रहे हैं ना, एक किताब है 1921-22 में पब्लिश हुआ था, डॉक्टर सुन यात सेन का. इट वाज yes, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइना. वहां पे उन्होंने लिखा है ये सारा लद्दाख, ये 5 फिंगर्स का जो माओ का बोलते हैं ना, उन्होंने लिखा हुआ है कौन से रीजन्स को चाइना ने उन दिनों का शब्द इस्तेमाल किया था, कॉलोनाइज करना. उन दिनों 1921-22 में तो एम्पायर्स और कॉलोनीज होते थे. तो दी रिपब्लिक ऑफ चाइना
he said should colonize all these areas, उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। आएंगे ये, इसकी चिंता मत करिए, बट इसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में लेना है ताकि वो एज अ राइप फ्रूट आपके हाथ में गिर जाए। तो वो फेज्ड अप्रोच में लेना है, जिसमें आगे चल के किसी टाइम आपको ये देखना है कि किस तरह से ये सिंकियांग और तिब्बत से निकल, सिंकियांग तिब्बत से अगर आपने उसको निकाल दिया, ये इलाका आपके पास आ गया ऑटोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल। ये इमीडिएट नहीं होगा कि लड़ाई लड़के आप कर लोगे, इमीडिएट नहीं होगा। एंड लड़ाई लड़ने का कोई मतलब भी नहीं है उस इलाके में, उस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड में। आई थिंक इसको नॉन मिलिट्री मेथड से निकालना ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत की मिलिट्री मेथड से, क्योंकि इसमें नुकसान। एक वीकेंड पैशन ने 3-4 सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके आपको उसको फ्लैश करता हूँ, बिकॉज दे आर, आई थिंक वी नीड टू क्लैरिफाई टू हिम। चाइना इज द राइजिंग पावर एंड यूएस इज द स्टेटस कोएस्ट पावर. If US does not do anything, Chinese economy will surpass that of the US. Now इसके ऊपर अलग से कई डिबेट हो चुके हैं, but you can briefly just Yes, satisfy his China is no longer a rising power, it's a declining power. declining power. इनके खुद के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आर्टिकल निकला था 2016 में कि 2018 में, सॉरी 2020 में, कि 2008 से they have been fudging year on year the GDP growth by 2%. Please calculate, इनका GDP आज के तारीख में 8 या 9 ट्रिलियन है, उससे ज्यादा नहीं है। And when you look at the debt that each of their provinces have, हम अपने खुद के स्टेट्स के डेट को लेके रोते हैं, इनके प्रोविंसेस के तो हमारे डेट से तकरीबन 10-15 गुना ज्यादा है। सो यू कैन इमेजिन क्या प्रॉब्लम है। बहुत ठीक है। सो दे हैव बीन फजिंग एंड ओपनली कहा है फजिंग। और 2016 में ये अभी जिसको प्रीमियर बनाया है, ये मेरे ख्याल फुजियान प्रोविंस में था, वहां पे इसके अगेंस्ट केस हो गया था और फजिंग इज जीडीपी ग्रोथ। 135% कुछ डेट है उसका वहां पे। सो अभी टू से दैट चाइना इज अ राइजिंग पावर, आई एम सॉरी, इट्स डिक्लाइनिंग। बाय जो मैट्रिक्स आप ले लो, इट इज डिक्लाइनिंग. In fact, latest reports now, economists says is that they can never surpass US. Forget it. They are declining. They will never surpass US. So I won't subscribe to that they are a rising power. They were, but now they are not. And the decline started from 2012. And post-COVID, it has been very steep. Absolutely. Actually, देखिए 3 चीजें उन्होंने गलत कर दी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो गई है, दूसरी उनका एक्सटर्नल डिमांड कम हो गई है, तीसरा इंटरनल डिमांड जीरो हो गई क्योंकि एक्सपेंडिचर करने की काबिलियत खत्म हो गई है। सो ये तीनों चीजें प्लस कोविड, इन चारों की मार ने ना इनको बहुत बुरी तरह से धकेल दिया है नीचे इस समय। और सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उसको डबल वैमी लगी है, ऊपर वाले भी मर रहे हैं और नीचे से डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म ही हो गया उसका। जो वो सोच रहे थे कि 2035 2040 तक होगा, वो तो ऑलरेडी हो चुका उनका। Absolutely. In fact, he's put in a continuation, but these are all linked to the first thing. Therefore, US will try to create a situation in the form of sanctioning or instigating Taiwan for freedom, where China does not. I think देखिए ये सारी चीजें चाइना के खुद के एजेंडा में हैं। यूएस को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आई थिंक मेरे हिसाब से जिस तरह से जी जिनपिंग जा रहे हैं, जैसे जनरल नारायण ने बोला है कि वो 3 जो आइलैंड्स हैं ना, वो शायद उसको कुछ करेगा एंड इलेक्शन से लिंक करेगा इसको। तो हमें चाइना नहीं बोलना चाहिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना मैं बोलता हूं बिकॉज़ द ताइवानीज आल्सो, उनको फ्रीडम नहीं चाहिए। उनके मन में ये आशा है कि किसी दिन हम मेनलैंड चाइना को कंट्रोल करेंगे एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो सिविल वॉर के पहले था। उनका ये है। यूएस का थोड़ा एक और नजरिया आपको बता दूंगा कि पैसिफिक वो अपना बैक वाटर समझता है। जब से उन्होंने मनरो डॉक्ट्रिन किया था, यूरोपियंस को बोला था यहाँ नहीं आएंगे आप, अटलांटिक और बाकी जगह करिए, इस इलाके में नहीं आएंगे, तब से वो किसी दूसरे पावर को अंदर नहीं आने देता है अटलांटिक में, पैसिफिक में। अगर चाइना ताइवान के साथ मिल जाता है तो पैसिफिक खुल जाता है उसके लिए। जो
रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी जो है, उसका और प्रॉब्लम जो पूरा है ज्योग्राफी का, इतने पूरा आइलैंड बदल चेन से जाएगा, वो खुल गया पूरा, पूरा बदल जाएगा एकदम पूरा। आप समझ लीजिए। डायनेमिक बदल जाएगा, उसकी पूरी नेवी पैसिफिक में आ जाएगी, और बिल्कुल बिल्कुल 3 नेवी है उसके पास जो पैसिफिक में आ जाएंगी, बिल्कुल। और वहां पे यूएस का केवल इंडो पैकॉम अकेला है। अकेला है वो, हवाई में बैठा हुआ है वो। हाँ, तो अब आप देख लो, वाई ताइवान इज सो क्रिटिकल टू यूएस दैट ही कैनॉट परमिट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना टू गेन ताइवान। It's something which I have been in the US for 1.5 years and we were doing a similar, इसी तरह का हम एक प्रोग्राम कर रहे थे वहां पर। जब भी और मेरा एक प्रोफेसर था जो फॉर्मर डायरेक्टर था CIA का, डायरेक्टर नहीं, फॉर्मर सीनियर ऑफिशियल ऑफ CIA, बॉब ओकॉनर वाज हिज नेम। वो बोल रहे थे कि भाई जहां ताइवान का सवाल आया ना, और ये CIA वाला बंदा बोल रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, जहां ताइवान का सवाल आया, US हैज नो नो चॉइस बट टू सेव ताइवान। इट विल डिफेंड ताइवान एट एनी कॉस्ट। तो ये हमारे व्यूअर्स को समझने की बहुत ज़रूरत है कि इसी वजह से चाइना भी थोड़ा हेजिटेट करता, नहीं तो अगर और कोई जगह रही होती या इसका यूएस का इंटरेस्ट नहीं रहा होता, अब तक तो चाइना ने उसको, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़प लिया होता कब का। ये वही एक कारण है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। एक राकेश भाटिया जी का, ब्रिगेडियर राकेश भाटिया हैज given a question. Taiwan military leaders are aware that help from the US will take time to come to its help. Is the ROC army capable of holding the PLA till then? This is from the war game scenario which I had, I think, painted in the beginning. नहीं नहीं, आई वुड जस्ट गिव वन थिंग, फॉर एनी एम्फीबियस लैंडिंग भाटिया जी, टोटल एयर डोमिनेशन चाहिए आपको। एयर सुपीरियोरिटी छोड़ो, एयर डोमिनेशन चाहिए उस इलाके के ऊपर, कोई नहीं आएगा वहां पे, मिसाइल्स भी नहीं आ सकते वहां पे। दूसरा, आपको टोटल सी कंट्रोल चाहिए उस इलाके में, सी डिनाइल नहीं, सी कंट्रोल, मतलब कोई जहाज अंदर नहीं आएगा, तब जाके आप ये लैंडिंग कर सकते हैं। कंपेयर इट विद नॉर्मंडी, द एलाइज हैड टोटल एयर कंट्रोल एंड टोटल सी कंट्रोल, तभी जाके वो लैंडिंग करे थे। यू बोट कैंपेन बहुत जबरदस्त चलाया था टू डैमेज ऑल द यू बोट्स, तब जाके वो लैंडिंग हो पाया था। So it's not so simple that these people can do. Americans also know that there is going to be a problem, and that is why apart from Subic Bay, फिलीपींस में 4 बेसेस और साइन किए हैं। 2 इमीडिएटली हैं जो ताइवान को के बगल में है, और 2 हैं जो साउथ चाइना सी के बगल में है, शार्बरो शोल्स और पैरासल आइलैंड्स को फेस करते हैं। ये 4 पे वो ट्रुप्स डिप्लॉय करने वाले, नेवी डिप्लॉय करने वाले, एयरफोर्स डिप्लॉय करने वाले, इंडो पैकॉम से निकाल के वहां पे डालने वाले। अब आप बता दीजिए पीएलए क्यों तड़प रहा है? इसीलिए तो तड़प रहा है, जैसे ही वो फिलीपींस में आके बैठ गए तो क्या कर सकता है? ऊपर ओकिनावा, इधर पीछे तो सपोर्ट के लिए गुआम है, 4 बेस यहाँ पे आ गए, इंडिया पे लॉजिस्टिक बेस है उसका, खत्म। बिकॉज एंड सिंगापुर, एंड माइंड यू सिंगापुर, डीगो गार्सिया सिंगापुर उतना ही सपोर्ट दे सकता है, बाकी पूरा आपका मटेरियल सपोर्ट इंडिया के थ्रू आ जाएगा। आप लड़के बता दो वहां पे। and Singapore is also a US base incidentally. This must बिल्कुल, be known. सिंगापुर This भी this है। should be known to people. ये लोगों को पता रहना जब चाहिए। ये कुछ करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने केवल यही करना है, नेवी को बोलना है दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दो, उसके बाद एग्रेसिव पेट्रोलिंग कर दो, जो आपके स्ट्राइक रिजर्व है उनको भी डिप्लॉय कर दो। अब वो सेंट्रल थिएटर कमांड से कुछ ले जा सकता है? क्या ले जाएगा? उसको डर लगेगा कि इंडिया कभी कब अटैक करेगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। द थ्रेट हैज टू बी इमिनेंट दैट आई कैन अटैक, बिल्ड अप एंड थ्रेट टू बी शोन एज इमिनेंट, दैट्स इट, ही गेट्स हैंडीकैप्ड। I'll club 2-3 questions now, sir. They are all on basically the visit of various people which has been taking place in the last, पिछले 3-4 एक महीने से कई सारी विजिट्स यूएस में हो रही हैं। जैसे कि अभी फॉरेन सेक्रेटरी भी गए थे उनके, और इसी तरह से कई और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए थे, फिर और मिलेनियर जो बिल गेट्स एंड सो मेनी, एलॉन मस्क एटसेट्रा हैड गॉन देयर। सो पीपल वांट टू नो एग्जैक्टली what does the US want to achieve with these visits, and what is their real intention. So, like, I'll just keep flashing them. Janet Yellen visit was
what is the significance No, nowadays? no, no. भारत को कन्वे नहीं कर रहा है. Let me नहीं, tell you. no, चाइना I just की काफी प्राइवेट bonds हैं which are held by private players in USA. For the last 3 years, they have been defaulting on their payments, and it is $1 trillion. US has not been defaulting on their payments, which are to be done to China, which are to the tune of 850 million. China has to annually pay for those bonds which are maturing to the tune of $1 trillion every year. They have defaulted on that. So I think this may be the one of the points that they may be talking, because if all these people, Bill Gates, Elon Musk, all these people hold it, quite a lot of big ticket companies, private players are holding it. If they club it together and give it to the US, then US stops paying. Na? Where is 1 trillion? Where is 850 million? So this is one major thing, and US has to play it carefully, because अगर ये कर देंगे तो चाइनीज इकोनॉमी क्रैश हो जाएगा. आज के दिन में जो डी रिस्किंग, फ्रेंड शोरिंग, रिस्क अपना नियर शोरिंग करना चाह रहे हैं, इट टेक्स अ लिटिल टाइम. I इमीडिएटली think it may also be to buy certain amount of time, or टाइम. how should I say that the Chinese should not take any precipitative action in view of what India and US इंडिया were doing. इंडिया और यूएस के बीच में जो चल रहा था, एक आई थिंक एक पैरेलल ट्रैक चल रहा था उसके साथ, चाइना के साथ, उसको अश्योर करने के लिए कि भाई इट्स पार्ट ऑफ अ नॉर्मल इज गेटिंग वरिड ना. आप फॉक्सकॉन चला गया है, अब करेक्ट. एप्पल आ गया है आपके पास, तो माइक्रॉन देन आपका ये माइक्रॉन चिप माइक्रॉन आ मेकिंग आ गया. गया है आपके पास. द मोमेंट दैट हैपेंस, ASML, which is the only lithograph company in the world which does the lithography on the chips when you are making it to make all your circuits, that's the only company with Netherlands. They will shift to India. They have stopped sales to China. So there are issues. China is threatening to stop the gallium and the germanium sales Yeah, to that them. rare earth. ठीक है. Incidentally, yesterday there was a message. Yesterday there was an item where they have found a large tract of rare earth in the Tibetan plateau closer to the Himalayas. So Okay. this is something which is, I don't know. We need to check on this. इसको check करने की जरूरत है कि इसमें जरूरत है कितनी सच्चाई है. सच्चाई है इसमें, या ये कहीं ये information warfare But तो नहीं खेला जा रहा the है. but they, why they must be doing it is because when they started threatening, at that time China controlled 90% of the rare earth trade. Today it has fallen to 70%, because people have started, and rare earth ka mining is quite is not environment friendly. So people have started doing that rare earth ka. India is also doing all its survey to search for it. But the latest has been the gallium and germanium, which are used for chips and high-end cars and everything. So because Elon Musk is also looking at shifting to India, Yeah. and they might be going to discuss the latest law that they have passed about trying various people who don't share their information and other things, which is the Xi Jinping's foreign policy, which has been ingrained as a law now. तो वो भी डिस्कस कर रहे होंगे, because it impacts that if somebody in US is not sharing, then they will try those people in China. So There is quite a lot of these issues come up. It yeah, has nothing to do with messaging India. there is a similar question which we had discussed, Colonel Chauhan. I think, can China effort मल्टी नहीं डोमेन थ्रेट फेस करने की काबिलियत नहीं है afford उसके any पास. full scale war against India at the moment when USA is against China? This is, I think we have discussed this issue quite in हाँ, detail. As of डेट now, पे. I don't think there is this capability available. But there is, again, I think we have a very nice friend in the weekend passion. China will not use its aircraft carrier. China will not use its aircraft carrier. It will use DF-17, DF-26 hypersonic missiles. US is already worried and planning to move its carriers back. Now, I had mentioned to you what happened last time when they fired these long range missiles. I इसके think this पहले was शॉर्ट discussed. रेंज फायर करते थे. Yeah, this लॉन्ग was रेंज discussed. जैसी फायर किया वो तो Yeah, it went way off the target.
It डिस्कस किया landed था in इसके बारे Japanese Sea. में, इसके बारे में So डिस्कस हुआ था पॉइंट। क्वालिटी पे ऊपर सस्पेक्ट है अभी, क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, क्या होगी, it is दैट more, I would say, जैसे आपके ये मिसाइल्स हैं जो हम चाइनीज मिसाइल्स बोलते हैं, these are all the build up evolution of missiles from the older missiles that they had, which were reverse engineered from the Soviet missiles. Soviet missiles के पूरा INS and their tracking and all those systems are based on GLONASS. So he is wanting to shift to Beidou. This tells you the accuracy of Beidou. तो लॉन्ग रेंज जैसे ही जाते हो, आपके कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल होने चाहिए करेक्ट फीड करने के लिए, तभी आपका वो जो INS के साथ है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, और आपके जो कोऑर्डिनेट्स लगे हैं उसके अंदर बेदू के साथ आप जा सकते हो वहां तक. तो दिस इज इंडिकेटिव ऑफ how accurate, also apart from what he had said, the whether the missiles are effective or not, is how accurate is your guidance system. Yeah. Because after all, मिसाइल को आपने कोऑर्डिनेट फीड करके उसने वहां पहुंचना है, तो You know, आप एरर देख लो कितना बड़ा है. people should know that the Chinese have their own guidance system. So Yes. तो कहाँ से बेदो प्रॉब्लम, से वेयर प्रॉब्लम कहाँ से एमिनेट हो रही है, that people should be a little careful about. We are not saying that we should be taking the Chinese threat lightly. No. no. What General अब Narayanan is saying that it is not that big a issue that we should get unnecessarily cowed down. There are ways and means to deal with China effectively. At no case we want to make a light of the Chinese threat. That should be I think. there Uh, was a study also which had come out where they had given the sequencing of the various wars that China CPC would need to fight. yeah, And P1 was Taiwan, P2 was yeah, India. correct. Recently, पहले, so that, and that is 2030 के बाद. और yes, मैं कह रहा हूँ 2025 और 27 के बीच का इलाका इज क्रिटिकल फॉर अस. मैं yes. 2030 भी नहीं बोल रहा. So I think the seriousness is known to everyone. What we are trying to highlight here is that the pit holes and the chinks in the armor, which we should be able to exploit. Uh, Colonel Salman contours of victory. I mean, this is something which we discussed in the form of notion of victory. Contours between victory and defeat are so blurred that in the event of a conflict, it will be difficult to decide who is the winner. Absolutely true, sir. There is no discussion or denial, and especially in today's world, you are seeing what is happening in Russia, Ukraine. It's very, very difficult given the information war, cyber war, etc., which is taking place. पता नहीं चलता है कि कौन जीत रहा हो है, क्या कौन हार रहा है, हो क्या रहा है. कहीं से कुछ खबर आती है, कहीं से कुछ खबर आती है. ऑन ग्राउंड जो है वही बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है. So therefore, I think he is absolutely right. I think we will request. China refused Blinken a visit after shooting off balloon. US really begged for the visit. US backtracked and said no decoupling but de-risking. We seem to avoid all visible signs. Uh, sir, you can answer. नहीं, US didn't beg for the visit. China didn't refuse Blinken a visit. Blinken cancelled the visit. So let's get our facts straight. When the balloon incident happened, Blinken cancelled that visit. So who It begged was the other whom way. is open to logic. It was the other way around. The Americans cancelled. Decoupling, like I said, decoupling word is an aggressive word. So they are talking of de-risking, friend shoring, near shoring. और वो हो रहा है, धड़ाके से हो रहा है. चलो एक छोटा सा समझाता हूँ मैं आपको. There is known as a container availability index and a cost of the container. Container availability index tells you कि पोर्ट में आपके containers available हैं कि नहीं है. If the figure is below 0.5, that means container availability थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Availability of container. If it is above 0.5, that means containers are available. If containers are available, मतलब पोर्ट में एक्टिविटी ज़्यादा हो नहीं रहा है. And linked to that is cost of the container. If the cost of the, अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो obviously cost of your containers will go up. But if the demand is less than the supply, the cost of the container obviously will come down. These are charted by a
company based in Germany. आज के तारीख में along the entire eastern seaboard, the container index CA छोटा x डालते हैं, container index of China is touching 0.7 to 0.75, and the cost of the container has crashed to below 50% of the actual cost, which is totally indicative of that all major activity along the entire eastern seaboard has collapsed as far as Chinese exports are concerned. What they are doing is called, in shipping terms, it is called 24-hour activity. Empty container उठाता हूं मैं from these ports, I take it to Hong Kong, मेरा ही है, I unload those empty containers, वहां से empty containers उठाता हूं और मैं लाके अपने पोर्ट में डाल देता हूं, तो इंडिकेट की कंटेनर एक्टिविटी हो रहा है, but there is actually no activity, and this is known everywhere, and it is coming out very loud with photographs of containers all lying in the port. All activity in the port is shut. There are hardly any trucks which are standing there. So let us not, your last line I will underline, let us not avoid these visible signs. Yes. Just to clarify his point, Colonel Salwan has actually given a clarification on the not this one. Uh, Chinese are way behind on hypersonic weapon systems under the FOBS, fractional orbital bombardment Orbital system. bombardment. Actually, the hypersonics are still under development. They've still not reached the operational deployment stage. So we should look at this. Russians, Kinzhal bolte, Russians are also testing it out in Ukraine. Don't Correct, say कि correct. भाई है, they're And testing it India out. and India has also just done the technology demonstration. It's not Yes, really gone ahead. The US had dropped this. US started off well, but somewhere in the middle it dropped the hypersonic program, thinking that it may not be required. But now again it has taken it up. again. So there's an article which I have written on hypersonics, so people will get the clarity as to why hypersonics is still the weapon of the future. We have to see as to how But it pans out. people forget our BrahMos is hypersonic. Yeah. BrahMos is So, already hypersonic. People who correct. don't know. The And it's available in open domain. आप speeds देख लो, Mach 7 तक जाता है. yeah, yeah. Then, so we had a number of other questions, I think, but since we are overshooting time, we will take the last question, which is of our Oh, fellow think tank or sister think tank, Indus International Research Foundation. After giving a timeline, this is a Bangalore-based think tank, and we are trying to yeah, collaborate. I know. Yeah, I after keep after interacting giving a with them. timeline for the unification of Z has bound itself that makes him a desperate man. His decision in this case may not be entirely rational. Is India prepared to take advantage? नहीं, How we I take had advantage? What do you have to नहीं say, नहीं sir? एडवांटेज तो मैंने नहीं बोला था, but I had told that she has painted himself in a corner because obviously he had given all these timelines. And also, I had said that we have discussed it in a mature manner. He is not a mature man. He has Yeah, shown himself not to be a mature man, and he obviously will be desperate. So that is why I said that we cannot afford to let our guard down. You have to be prepared. And at the moment, some incident like Galwan or something he can do in some other area of LAC where he feels that he should be able to do it and hold on to it, especially if he can hold on to that patch of land, he will try to do that. And a major threat, I had said, between 25 to 27, we have to be very careful of this man because he wants to go. And in within this, I will just add, how far is the CPC ready to accept whatever irrational decisions he is making? Where do the CPC, PLA, and PAP draw a line for him? When do they think that he has become a threat for continued CPC rule on China? These are issues also you should think about because absolutely. it's not a one-man show. After all, the CPC and the PLA carries the weapon, not Xi Jinping. If the PLA Absolutely. turns the weapon, somebody from PLA turns the weapon on Xi Jinping, what happens?
So they have to they could take a call that when does he become counterproductive for the continued rule of the CPC. After all, the single policy of CPC is continue to rule China. अब चाहे शी बैठा हो वहां पे या कोई और बैठा हो, वो कंटिन्यूड रूल ओवर चाइना है उनका प्रिंसिपल एम. उसके बाद बाकी सब आता है डोमिनेशन. डोमिनेट तो तभी करेंगे ना अगर सीपीसी रूल कर रहा है. एंड समवेयर they may take a call कि is he pushing them to a corner. फिर क्या होगा वो भी सोच लो. Thank you very much, sir. I think we are far beyond our scheduled time. Normally, we have it for 30-40 minutes and finish it off within an hour. But today, we have gone to about 1 hour, 15 minutes. Basically, we want to keep things short and sweet so that the audience gets to know. Thanks a lot, sir. In fact, I would finish off by flashing my vice chairman's comment on the today's discussion. Uh, My compliments to General Narayanan. Great thoughts. Thanks a ton for sharing a perspective which is, besides being brilliant, is highly reassuring, sir. Thank you very much, sir. Thank Jai Hind. you, sir. Thank you so much. Thank you so much for your We'll, kind we'll, words. we'll keep Honored, sir. we'll keep calling you back again, sir. Whenever available, always for stripes. Thank you, sir. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you.